Hi my YouTube family, this is Melody from Home Garden and Fashion. I thank you so much for being here today. Today we're going to have a wonderful time together. Hi, this is Mel. Today I'm going to show you how to use old Banarasi sari to make trim for your dupatta. नमस्ते, आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि ये जो पुरानी वाली बनारसी साड़ी है उसका ये चौड़ा सा बॉर्डर था बटन का, उसको मैं काट के ये दुपट्टा में लगाई हूँ। सो बनारसी वाला दुपट्टा कैसे बनाएंगे, तो इसमें मैं इसको सिलाई कर दी हूँ इसके साथ, तो इससे बहुत अच्छा दुपट्टा बनेगा। और इसमें बनारसी का कपड़ा काट काट के फूल भी बना सकते हैं इसमें और लगा भी सकते हैं दुपट्टा में, तो वो भी अच्छा लगेगा देखने में। तो अब इसको मैं दिखा रही हूँ। सो नाउ आई एम गोना शो यू हाउ टू डू इट। आई डिड वन साइड, another side I have to do it. So I have this piece and I'm gonna have to join it from the front. I'm gonna join it such a way that it will come in the front. So this is the back and this is the back of this, so we join two backs, so then it will come in the front like this and then we'll stitch. So ये है इसका, ये है फ्रंट, जो है ना फ्रंट साइड वहाँ लेना होगा। तो पहले इधर से देख लेते हैं कि कौन सा वाला फ्रंट साइड है, क्योंकि उसमें लगाया हुआ है पहले से। So you have to first see which one is the front, which one is the back. That's very important. So now this is the front and this is the back. So we have to use this one like this. So this back and this front will be like this stitched, so that when we rotate it, it will come like this. So this one will come in the front. We'll keep a little bit extra so we can fold it. So we get the front of this and the front of this line up like this, but then it has to come like this. Okay, so I'll show you.
So as you can see, this is stitched now. Now we're going to just turn this one like this, and then we'll fold it here like this, and then we're going to stitch it over here. So that's how it's going to look like this. Okay. We can't make it smooth over here and run it again. So as you can see, now I'm gonna cut it over here, so I can fold this. See, this is flat now. Now I'm going to fold it like this and fold it a little bit more like this and stitch it here. So we can measure it with this and see how much. Yes, that seems like right size. So this is how you can put Banarasi trim on your dupatta, and it will look really nice. So you see, everything is stitched, and now what we have to do is
stitch this side. Now we have to just fold it like this, and now run it, and we'll fold this side too. So this is how you can put Banarasi trim on your dupatta. So this is looking very lovely. बहुत अच्छा लग रहा है इसको देखने में, बनारसी का दुपट्टा. अब मैं बनारसी कपड़ा का और भी जो लेफ्ट ओवर है ना, ऐसे जैसे है ना, तो इससे काट काट के फ्लावर बना बना के फिर इसमें साथ दे सकते हैं. तो स्टिच कर देंगे तो अच्छा लगेगा देखने में. So you see it's all done, only this side I have to fold it. This side is done. On this side I'm just gonna fold it like this. So देखिए ये पूरा बन चुका है, बस ये साइड को जो है फोल्ड करना है, बस हो जाएगा. अब मैं कुछ डिज़ाइंस वगैरह दूंगी गोटा पट्टी से, वो दूसरी वीडियो में होगी क्योंकि फिर वो टेबल में लगा के करना होगा.
So now you see I have my बनारसी trim दुपट्टा. So जैसे आप देख रहे हैं कि बनारसी वाला दुपट्टा बन चुका है और मेरे पास काफ़ी बनारसी के ऐसे जो है बॉर्डर्स हैं, उससे मैं अच्छे अच्छे बनारसी के दुपट्टा बना सकती हूँ, दुपट्टा में लगा सकती हूँ. तो ये एक दुपट्टा में लग गया. अब ये जब बनारसी का बॉर्डर लग गया तो ये तो बहुत ही खिलने लग गया. तो अब इसमें मैं गोटा पट्टी लगा के फिर आपको दिखाऊंगी बाद में. तो अभी बस ये पहले वाला एपिसोड हो गया. इसमें जो ये बॉर्डर लगाने का इसको ठीक करके मैं दिखाती हूँ पहले. सो हियर इट इज़. इससे बनारसी बॉर्डर दुपट्टा. सो ये बनारसी बॉर्डर वाला दुपट्टा हो गया. अब मैं इसको डिज़ाइन वगैरह दूंगी. अब मैं सोचूंगी कि कैसे डिज़ाइन दूंगी. वैसे मेरे पास कुछ आइडियाज़ तो हैं अभी, लेकिन फिर मैं देखूंगी कि कैसे कैसे लगाते हैं, फिर मैं आपके साथ शेयर करूंगी. तो ये एक पुराना दुपट्टा था जो बनारसी का ये बॉर्डर लगाने से बहुत ही खिल चुका है अब. ओके, थैंक यू सो मच. डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर एंड आई सी यू विद मेनी मेनी मोर. ठीक है, लाइक सब्सक्राइब कमेंट कीजिएगा. देखने के लिए बहुत सारे धन्यवाद. और मैं फिर और लेके आऊँगी नए नए डिज़ाइंस.